first understand this very weird concept of emotions. आपने आज क्या सब्जी बनाई अपने घर? You would think, what is the link of emotions and sabji? It's like cooking and emotions are like different things. But cooking in the kitchen and cooking in your inner world, cooking your emotions in your inner world are somewhat like same things. आपको राजमा चावल बनाने हैं तो राजमा की रेसिपी में राजमा तो यूज होंगे ही ना. यू कांट मेक राजमा चावल विदाउट राजमा. बट आफ्टर दैट कौन सा मसाला पुट इन करना है, नमक कितना डालना है, मिर्ची कितनी डालनी है, मसाला कितना डालना है, या आप पे डिपेंड करता है. सिमिलरली हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी लाइफ में इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं. राजमा एग्जिस्ट करता है. सैड इमोशंस, फियर इमोशंस, इरिटेशन इमोशंस, एंगर इमोशंस, एवरीथिंग एग्जिस्ट. कोई पर्सन बोलता है मैं इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी लाइफ में इमोशन एग्जिस्ट नहीं करते. इंटेंसिटी वेरीज. बट कितना मसाला डालना है, कितना नमक डालना है, इसका मतलब होता है कितना उस इमोशंस को फील करना है अपनी बॉडी के अंदर, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है. तो इमोशनल मास्टरी में आप एक बात समझ लेना, हम अपने इमोशंस को खत्म करना नहीं सीख रहे हैं. हम अपने इमोशंस को मैनेज करना भी नहीं सीख रहे हैं. हम अपने इमोशंस की इंटेंसिटी को कितना फील करना है, कैसे फील करना है, वो सीखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू नो दैट वी नो ऑल द इंग्रेडिएंट्स वी वांट टू पुट. हमें पता है अगर हमें गुस्सा करना है तो हमें इस लेवल तक ही गुस्सा करना है. वी नो ऑल आर राइट्स एंड ऑल आर रॉन्ग्स. I'll give you an example. They both have very different personalities. ये कभी गुस्सा नहीं करते हैं और मैं ऑलमोस्ट हमेशा गुस्से में रहती हूँ. ये बहुत जल्दी डिसअपॉइंट होते हैं एंड मैं डिसअपॉइंट इतनी ज्यादा जल्दी नहीं होती हूँ. इमोशंस दोनों में है, गुस्सा के दोनों में है, डिसअपॉइंटमेंट के, बट हमारी इंटेंसिटी फर्क होती है. सिमिलरली इन्होंने ज्यादा नमक डाल दिया, नमक ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, मैंने ज्यादा नमक ऑफ एंगर डाल दिया. सो हम आज रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को कितना डालना है वो समझने वाले हैं, ताकि हम परफेक्ट राजमा कुक कर पाए और अपने गेस्ट को खुश कर पाए. Alright, so are you ready with us to know the recipe of your favorite dish? Mine is rajma chawal, yours can be any. So let's learn the recipe, how to cook emotions, and let's learn what's cooking inside our inner world. So before starting, I would like to share a story of a young monk and how he's adjusting in a monastery. तो बेसिकली ये स्टोरी है एक यंग मॉन्क की जो एक मोनेस्ट्री में जाता है मेडिटेशन सीखने के लिए. सो वहाँ पे सारे ना क्लासमेट्स भी होते हैं यंग मॉन्क्स के, और वहाँ पे सीनियर्स मॉन्क जो होते हैं उनकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यंग मॉन्क्स को 5 hours a day लगातार मेडिटेशन सिखाना. उनकी ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो एक यंग मॉन्क की कहानी है ये. वो उस मोनेस्ट्री में जाता है एंड ही इज गिवन अ टास्क कि आपको 5 hours लगातार मेडिटेशन करनी है. ये बहुत सिंपल पोर्ट्रे होता है बट ये इतना सिंपल होता नहीं है. तो वो अपने क्लासमेट्स के साथ वो अपना यंग मॉन्क बैठता है एंड दे स्टार्टेड मेडिटेटिंग. बट ये जो पर्टिकुलर मॉन्क होता है ही इज नॉट एबल टू इवन मेडिटेट फॉर वन आवर. But why is that so? वो क्यों नहीं मेडिटेट कर पाता? वही तो, वो अपनी सराउंडिंग्स को ब्लेम करने लग जाता है, अपनी डिस्टर्बेंसेस को. लाइक फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड में बर्ड्स चॉपिंग कर रही हैं, या फिर हवा की आवाज आ रही है, या फिर उसी मोनेस्ट्री में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रही है. सो वो सब ब्लेम उन चीजों पे डाल रहा है. तो वो एक दिन ट्राई करता है, उससे नहीं हो पाता. वो सेकंड डे ट्राई करता है, उससे फिर भी 5 hours स्ट्रेट नहीं हो पाता. वो थर्ड डे ट्राई करता है, उससे फिर भी नहीं हो पाता. अब फोर्थ डे वो हार के डिसअपॉइंट होके अपने जो सीनियर मोनेस्ट्री होती है और जो सीनियर अपने उनके जो मॉन्क्स होते हैं उनके पास जाता है. कहते हैं सर आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड, मेरे से 5 hours लगातार मेडिटेटिंग नहीं हो पा रही है, बट शुड आई डू. तो जो उनका सीनियर मॉन्क होता है वो उनसे कहता है डू यू रियली नो द रीजन बिहाइंड इट. I know it. इतनी सारी disturbances in the background, कैसे कोई person meditate कर सकता है? That's really obvious. ओके. सो जो सीनियर मॉन्क है उसने उसको सजेशन दिया कि आप एक रिवर के बीच में जाओ विद अ बोट और वहां पे मेडिटेट करो. क्योंकि जब आप एक रिवर के बीच में होगे देयर विल बी नो डिस्ट्रैक्शन एज सच. आपकी मनुष्य में जो डिस्टर्बेंस होती है वो नहीं होंगी, वहां पे ज्यादा एनिमल्स नहीं होंगे रिवर के बीच में. सो आप रिवर के बीच में जाओ विद अ बोट एंड देन स्टार्ट मेडिटेटिंग. तो उसने उस एडवाइस को माना एंड ही वेंट इन द मिडल ऑफ द रिवर. वो अपना मेडिटेशन स्टार्ट करता है. फर्स्ट डे फैबुलस, उसने अपना 5 hours का कंप्लीट कर लिया होता पूरा. सेकेंड डे जाता है वो,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हिज लाइफ। जब वो सेकेंड डे मेडिटेट कर रहा होता है रिवर के बीच में, 2 आवर्स हो चुके होते हैं एंड उसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेट करते हुए निकल जाता है। और जब एंड मूवमेंट आ रहा होता है, जस्ट हाफ एन आवर ऑफ द मेडिटेशन टाइम, तो पीछे से बड़ी तेज से एक दूसरी बोट आती है और उस बोट को टकरा जाती है एंड उसकी मेडिटेशन बीच में स्टॉप हो जाती है। गलती बोट की हुई ना, उसने क्यों डिस्टर्ब किया उनको मेडिटेट करते हुए? वही ना। सो वो अपने बैक एंड में सोचता रहता है कि अब तो ये गया, ये जो भी जिसने मेरे पीछे बोट लगाई है, द पर्सन इज गॉन नाउ। वो उसका मर्डर करने के लिए सोच देता है कि मेरा जस्ट आज का गोल पूरा होने वाला था एंड मैंने मेडिटेशन करना सीख ही लिया था, बट स्टिल उसने एंड में आके सब खराब कर दिया। सो ही वाज लाइक रेडी टू मर्डर द पर्सन जो उसने अपनी बोट को टकराया। सो वो पीछे मुड़ता है, अपने हाथ में एक जो उनकी छोटी सी तलवार होती है, छोटी सी जो भी कह सकते हैं, उनके पास वो होती है, एंड इज अबाउट टू लाइक किल द पर्सन। बट वो नोटिस करता है कि देयर वाज नॉट रियली पर्सन देयर। वहां पे कोई बंदा था ही नहीं, बस वो एक सिंगल बोट थी। वो पता नहीं कैसे आई, वो कैसे रिवर के फ्लो के साथ उसकी बोट पे टच कर गई, बट उस बोट को कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा। बट जैसे उस मॉन्क ने उसको देखा, उसका सारा गुस्सा निकल गया, बिकॉज देयर वॉज नो वन टू ब्लेम अपॉन। सो ये एक छोटी सी स्टोरी है कि हम ना अपने आपस में लांछन लगाने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह से वी आर डूइंग दिस, या मेरे साथ ये हो गया, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। अब अंदर झांको कि ये चीजें कोई कर रहा है या फिर मैं ही हूं जो ये अपने साथ होने दे रहा हूं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी इमोशंस फील करते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, इरिटेशन हो, वो एक्चुअली हमारी खुद की वजह से होता है, किसी और बाहर की वजह से नहीं होता है? एक्सटर्नल स्टिमुलस अपनी पूरी लाइफ में आती रहती है। इट्स अपॉन अस कि उसको मैनेज कैसे करना है, उसका एप्रोप्रिएट रिएक्शन कैसे देना है। इट्स अपॉन अस। तो शायद हम उन्हीं इमोशंस को, उन्हीं एक्सटर्नल स्टिमुलस को हम ना इफेक्ट हो, हम शायद आज वही सीखने बैठे हैं। यस। तो चलिए आज सीखते हैं कि कैसे हम एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहे चलते रहे, आते रहे, हमें इंटरनल वर्ल्ड पे उसका कोई इफेक्ट ना हो। यस। So we need to understand our emotional loops and their impact on fatigue. हमारी हर लाइफ में हर एक इमोशन लूप रिपीट होता है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है और यू आर नॉट फीलिंग गुड, या फिर कोई भी पर्सन जो मेरी लाइफ में आता है, पता नहीं क्या हो जाता है कि वो मेरी लाइफ में जो छोड़ के चला जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप ये देखते हो, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, चौथी बार भी रिपीट हो गया। हमारी सारी जो ब्लेम होता है वो हमारी सारी फिंगर्स अपने पे पॉइंट हो जाती है। अगर 4 बार different people have left me, that means the problem is with me. What if I give you a bulb on moment right now? The problem is not with you. The problem is not with the other person. The problem is with the emotional loop जो आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई नई स्किल सीखनी है, गिटार या डांस, तो एक दिन में नहीं सीख सकते ना। कम से कम महीने में कितनी क्लासेस लेनी पड़ती है? हमारे लूप्स भी ऐसे ही काम करते हैं, ताकि वो लूप्स हमारी लाइफ में बिल्कुल पक्के बन जाए, द परमानेंट रेजिडेंस एट आवर होम्स। वो हमारी लाइफ में रिपीट होते रहते हैं। अगर एक लूप इतनी बार रिपीट हो गया तो वो हमारा परमानेंट लूप बिलीफ सिस्टम बन जाता है। प्लीज राइट दिस वर्ड, परमानेंट लूप बिलीफ सिस्टम। मतलब अब वो एक लूप नहीं रहा, अब वो एक बिलीफ लूप बन गया। और बिलीफ सिस्टम मतलब जो हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर हो। अब फिफ्थ टाइम जब कोई एक अच्छा पर्सन भी आपकी लाइफ में आएगा, वो इसलिए छोड़ के जाएगा क्योंकि ये लूप रिपीट होनी है आपकी लाइफ में। अब लीविंग पीपल इज अ वेरी कॉमन लूप। आपको कुछ और लूप्स पता है जो हमारी लाइफ में रिपीट होते हैं? एक तो बहुत प्रोमिनेंट लूप होता है इग्नोरिंग पीपल। मेरे साथ तो ये बहुत होता है। इफ अगर मेरे को किसी को कन्फ्रंट करना है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, सो एक वो लूप बन जाता है काफी लोगों का, मेरा भी पहले बहुत था, कि आई यूज टू इग्नोर द सिचुएशन और द कन्फ्रंटेशन। तो ये लूप बनता जाता था क्योंकि मैंने कभी अगर इग्नोर नहीं करा होगा तो मेरा वो जो एक्सपीरियंस था मे बी वो बैड होगा,
and I started ignoring the situations or maybe the confrontations. So मेरा वो एक टाइम बाय टाइम वो एक लूप बनता गया। अब जब भी कोई सिचुएशन आती है, मैं फर्स्ट थिंग क्या करता था, इग्नोर द सिचुएशन। और ये सोल्यूशन नहीं है उस चीज का, सोल्यूशन हमेशा कन्फ्रंट करके उससे बात करके यही चीज निकलती है। इग्नोर करना इज नेवर द सोल्यूशन। और हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे लूप्स होते हैं वही सोल्यूशन है, विच इज नॉट रियली इट। नेक्स्ट टाइम जब हमारा कोई लूप रिपीट हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? उससे पहले हमें करना पड़ेगा कि इमोशनल लूप से होता क्या है, व्हाट डज द इम्पैक्ट क्रिएट ऑन आवर लाइफ। Right. So let's understand those emotional groups and identify them. कभी कभी ऐसा होता था कि जब ये मुझे इग्नोर कर देते थे तो मैं बहुत ट्रिगर हो जाती थी और हमारी आधी लड़ाइयां सिर्फ इसी बात पे होती। So this was my point of trigger when I used to get emotionally unstable. You have to identify your triggers. What can be some of the triggers? It can be anything, like for example, in my case, confrontation. The other thing, it can be ignorance from the other people. And the third thing, it can be maybe if the person is not really listening to yourself, or it can be anything which can be related to your own personal life, जो आपके इमोशनल ट्रिगर्स को फिर से जागरूक करते हैं और आपको मजबूर करते हैं कि अपने लूप्स को वो आप रिपीट करिए। तो इसका मतलब अगली बार आप मेरा मैसेज इग्नोर करके मुझे ट्रिगर नहीं करने वाले। यस। अब ये तो हो गया कम्युनिकेशन, बट कितनी बार ऐसा होता है कि हम उस पर्सन को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मे बी बिकॉज हमारे प्रोफेशनल रिलेशंस होते हैं, या हमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम उनको जाके बताएं कि दिस इज डिस्टर्बिंग मी या दिस इज हर्टिंग मी। उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? वी विल आइडेंटिफाई आवर ट्रिगर्स, वी विल रीराइट आवर नर्वस सिस्टम, वी विल ब्रेक द साइकिल एंड इनकलकेट अ हैबिट। इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। हम उस लूप को आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसको रीराइट करेंगे, उस साइकिल को ब्रेक करेंगे और हैबिट को चेंज करेंगे। इसको हम लर्न कैसे करते हैं? हमारी एक इमोशन लूप है, उसको हम रीराइट करेंगे, उसको हम ब्रेक करेंगे और उसके बाद हम एक नई हैबिट को चेंज करेंगे। हम जब भी कोई चीज वर्ड से सीखते हैं हमें याद नहीं रहती, पर जब हम एक्शन से सीखते हैं तो हमें बहुत प्रोमिनेंटली याद रहती है। तो हम शुरू करते हैं आइडेंटिफिकेशन से। यू ऑल हैव 5 minutes in your hand. Write down all the emotional triggers which trigger you and identify that repeating emotional pattern. बहुत बार ऐसा होता है जब आपको कोई इग्नोर करता है तो आप बहुत गुस्से में आ जाते हैं, जैसे मैं। तो वो हमारा लूप होता है। या तो आप पर्सन को कम्युनिकेट कर दो कि प्लीज आप ये मत कीजिए बिकॉज इट ट्रिगर्स मी। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो उसको आइडेंटिफाई करके चेंज कर दो। तो लेट्स आइडेंटिफाई आवर इमोशनल लूप्स। सेकेंड स्टेप, राइट डाउन द ट्रिगर। अब इमोशनल लूप को स्टार्ट करने के लिए कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस विच आर नोन एज द ट्रिगर्स, वो तो जरूरी होगा। अब आपका जो इमोशनल लूप जब रिक्रिएट होता है या फिर उसको दोबारा आने की जो उसकी बारी आ जाती है, वो किस ट्रिगर से आती है, वो जानना भी बहुत जरूरी। सो फर्स्ट स्टेप इज आपको इमोशनल लूप को आइडेंटिफाई करना है, राइट डाउन इट ऑन अ पेपर। द सेकेंड थिंग इज राइट डाउन द ट्रिगर, जिस चीज की वजह से वो लूप इनकलकेट हो रहा है। अब थर्ड स्टेप इज नोट योर इमोशनल रिएक्शंस। अब जो हमारा ट्रिगर हुआ उसके बाद हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस चीज से, वो भी एक राइट डाउन आप उस पेपर के नीचे करिए। रिफ्लेक्ट एंड कंसिडर द ऑल्टरनेट रिस्पॉन्सेस, ये उसके बाद होगा जब आप ये तीनों चीजें लिख लेंगे पहले, उसके बाद हम ये दो चीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो यू हैव 5 minutes, अभी ही आप अपना इमोशनल रूप लिखेंगे, उसके लिए जो उसके ट्रिगर्स जो उस चीज को क्रिएट करते हैं वो लिखेंगे, और जो थर्ड थिंग जो उसके रिस्पॉन्सेज होते हैं अपने लूप्स के वो लिखेंगे। यू हैव जस्ट 5 minutes ऑफ योर टाइम एंड वी विल डिस्कस इट। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे इमोशनल ग्रुप ये भी हो सकता है कि हम लोगों को बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है बिकॉज दे हैव बीन सो मच हर्टेड इन द पास्ट, दे लीव द पीपल बिफोर दे लीव देम। सो दैट इज एन इमोशनल लूप। उसके पीछे ट्रिगर क्या है? उसके पीछे ट्रिगर है फियर ऑफ रिजेक्शन, कि before they reject me let me reject them. That is a trigger point. Fear of rejection is a trigger point. And what is your emotional reaction? What are the emotions you feel at that point of time? You feel ignored, you don't feel your self-worth, you don't feel that you are being given that much kind of attention or efforts by the people in your life, and you leave them. That is a reaction. Another emotional loop which is very common could be that toxic relationships में आ जाना,
that you stay in toxic relationships just because you want to be with them. And here, toxic relationships means friendships, connections, family members, everybody around there. Why? Because you just want somebody to be with you. You don't want to be alone. That is an emotional pattern that you can't be alone. The trigger is the fear of solace. That you have a fear of being alone, you have a fear of solace कि मुझे शांति नहीं पसंद, मुझे chaos चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे toxicity लाइफ में चाहिए, वो मेरा ट्रिगर पॉइंट है. And what is your emotional reaction? That you get obsessed with people, you get attached with toxic people, and leaving them is very painful for you. If you have another emotional loop in your mind and you want to discuss it right now, for sure we can do that. So the next topic we are going to cover is, again, we are understanding and decoding our emotional loops. Let's understand how we can rewrite it. So what happens? Our nervous system responds in three ways. One is the fight, one is the flight, and one is the freeze. Let's take the example of confrontation. Let's assume हम इनका example लेते हैं. आपको किसी ने confront करने की कोशिश करी, तो आप fight लोगे, flight लोगे या freeze लोगे? मैं flight. I just ignore the situation and ignore the confrontation. Yes, तो ये भाग जाते हैं. So flight means भाग जाना. Let's assume कोई ऐसी situation है जहाँ पे आपको अपने points रखने हैं and you know you are right. What will you choose? Fight, flight or freeze? Obviously fight. Yes, but there are some situations जैसे इनकी interview situations जहाँ पे हमें पता है जो हमारे सामने है person वो हमसे काफी बड़ी position पे है, तो हम तब क्या करेंगे? Freeze हो गया था. तो हम सिर्फ हमारा nervous system तीन चीजों से ऑपरेट करता है. Fight, flight, freeze. Fight, flight, freeze. अब हमें ये नोटिस करना है कि जब हमने अपने रीराइटिंग करी ट्रिगर्स की, तो आप भाग रहे हो, लड़ रहे हो या रुक रहे हो. अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ऑब्वियसली भाग नहीं रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो तो फाइट कर रहे हो. अगर आपको इरिटेशन हो रही है तो वो इरिटेशन शो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर शो कर रहे हो तो फाइट कर रहे हो, नहीं शो कर रहे हो तो फ्लाइट कर रहे हो. एंड फ्रीज जो होती है जनरली उन सिचुएशंस में होती है जिनको हम जेंजी में कहते हैं कि अब हमारा बस डन हो गया, अब नाउ वी आर एट द बॉर्डर लाइन, नाउ वी आर डन. So we are done को nervous system में कहते हैं freeze. So write down, is it fight, flight or freeze? 90% situations में आप क्या करते हैं? Fight, flight या freeze? You will put it in the chat box or unmute yourself. So now let's break the cycle. When we are fighting, we are actually wanting control of that situation. When we are flight, इसका मतलब हमें कंट्रोल नहीं चाहिए, प्लीज हमें let us go and let us run. Let be in our zone. Yes, and when we are in freeze, that means we don't know हमें कंट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, so we freeze, we go neutral. So अगर आपका फ्लाइट है तो मतलब आप मेनली एक ऐसे पर्सन हो जिनको कंट्रोल ओवर सिचुएशंस नहीं चाहिए. Like we don't want to get confronted, we don't want to get control, and we don't even want to control. It's like कि we are not answerable to the other person. It's me and यही मेरी चीजें हैं and मेरे को इग्नोर करना. एंड फाइट में होता है कि हमें पूरा कंट्रोल चाहिए, हमें अपने आप को सही प्रूव करना है. We are like dominating over the other person. Yes. And freeze means we are just neutral. We don't know हमें करना है कि नहीं करना, तो confusion जब आती है तो freeze हो जाते हैं people. अब आप ये चीज नोटिस करना, being dominant is not good and being not dominant is also not good. It has to be a neutral thing, not freezing neutral thing. It has to be a clean slate. अभी आपके स्लेट पे लिखा है भाग जाओ या फिर स्लेट पे लिखा है लड़ो. अब उस स्लेट को साफ करना है. अब आप साफ कैसे करते हो? लेट्स अज्यूम आपके पास कपड़ा है और ये आपकी स्लेट है. आपके लैपटॉप की स्क्रीन साफ कैसे करोगे? ये आपके पास कपड़ा है and you're just going to do it like this. So similarly there's an invisible slate जहां पे लिखा है लड़ो या जहां पे लिखा है भागो या जहां पे लिखा है रुक जाओ. आपने कपड़ा उठाना, you have to just clean it right now. Can you do it? Can you do it with me? Just clean that. You have to do it. It's not a fun entertainment thing I'm teaching you कि मजे करना है हमने. Just clean the slate, whatever you have written. Now the slate is completely clean. Now we'll break the cycle. We'll inculcate one daily habit जिससे हम उस आदत को, उस लूप को तोड़ सकते हैं. And we'll do it for 21 days. प्लीज इस क्लास के बाद मुझे ऐसे मत रिव्यूज देना कि मैंने 2 दिन करी थी ये हैबिट और मेरे को कोई चेंज नहीं दिखा. इमेजिन 10 years का लूप, 5 years का लूप आप 21 days में तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो. Don't tell me you want to break it in 2 days. If you want to, you have to be really very emotionally mature and expanded. Right now, none of us are right now in the classroom. So it needs 21 days.
एंड कोई हैबिट नहीं लेगा कि अभी आप 10 बजे उठ रहे थे अब आप उठोगे 3 बजे। इतनी जल्दी हैबिट नहीं, इतनी चेंज नहीं आ सकता है। You'll make small habits change. What habits can you inculcate in yourself? Let's assume confrontation. So next time, if you're having a situation where you have to give a confrontation, I'll give it. That is the habit I'm inculcating. If I feel bad after getting ignored, next time, even when he is ignoring, either I'll communicate, that's habit I am developing in myself, or I'll just, shouldn't bother me at all. और सिर्फ बोलना नहीं है कि मुझे बॉदर नहीं करना, अंदर से भी बॉदर नहीं करना चाहिए। बोथ आर इंपॉर्टेंट। एंड बॉदर कर रहा है तो कम्युनिकेट करो। So let's decode one habit which we can inculcate to break the loop today. हमारे इनर हार्ट में टू वॉइसेस हमेशा चलती है। लेट्स अस्यूम आई एम द हार्ट एंड ही इज द माइंड। ओके, वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन अबाउट माई हार्ट थिंक्स आई कैन डू इट, बिकॉज हार्ट को तो हमेशा लगेगा आप कर सकते हो, बिकॉज वो तो डेल्यूजन्स डेलुलू में जीता है, बट माइंड लॉजिक से काम करता है। सो लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन अपॉन, लेट्स अस्यूम you have to crack a new deal in your profession. Your heart says you'll be able to do it, सारा लोड ले लो, कोई बात नहीं, you're having money, you're having this thing, you're आपका पूरा दिन occupied है, it's fun, let's do it, no overthinking, nothing, life sorted. Mind कहता है you can't be able to manage so many things, how will you be able to do it? So let's have a conversation between heart and mind and listen to it very very seriously, because it's important. I feel if I'm getting so much money, and obviously my full day is equipped and everything. So let's go and crack this deal. This is fun. This must be fun. See, but am I really equipped with the skills, or maybe if I'm really equipped with the things that the other party needs, like am I able to provide them? Why always demeaning me? I can do it. I know it. I trust myself. But I have not seen you like doing the things. I do. I don't get time. How will I learn all these things? But once I take the project, I will learn for sure. Do you think you will be able to, cause Yes. you are occupied in this and you have to do that as well. So how would you I be feel able to, I'll be able to do it. You're just overthinking, just thinking too much. and you are thinking really in the like future and Delulu. But that's okay. We have to do it, right? It has been my dream from the very beginning. But do you have any blueprint about this? What if you get fail about that and you are not able to like gain from the thing, और आपके जितने भी efforts हैं वो सब waste चले जाएं? तो what if, क्या पता अगर आप जो time इसमें लगाओगे वो आप किसी दूसरी चीज में लगाओ जिसमें आप proficient हो, so what? Right. So we have these kinds of conversations every time, and it's always a battle of heart and mind. ऐसा हमें लगता है कि ये battle है heart and mind का. It's not a battle of heart and mind, because most of the times your gut, mind, and heart are aligned. It's just our two opinions having a debate with each other. इट्स मोर लाइक, आपने कभी डिबेटिंग देखी है? आप आज जाके देखना यूट्यूब पे डिबेटिंग कैसे होती है। एक पर्सन फॉर में बोलता है और एक पर्सन अगेंस्ट में बोलता है। प्लीज न्यूज चैनल्स पे डिबेटिंग में देखना। वो डिबेटिंग की हम बात नहीं करें, आई शेयर योर वीडियो, आप उसमें देखना। रिसेंटली आई वेंट इन फॉर अ डिबेटिंग एंड मुझे एक ऑन द स्पॉट टॉपिक मिला एंड मुझे उसके फॉर में बोलना था क्योंकि मुझे फॉर मिला था, बट मुझे बोलना उसके अगेंस्ट में था। But I couldn't speak against because I was not given the topic against. Similarly, what happens in our mind wants to work all the time. So जब हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं ना, तो हमारा माइंड बोलता है चलो बैटल करते हैं, एक डिबेट करते हैं, एक बोलेगा फॉर, एक बोलेगा अगेंस्ट। आपको ये समझना है ये दोनों ही आपकी आवाजें हैं, उनमें कोई भी जीते और कोई भी हारे, आप ही जीतोगे और आप ही हारोगे। लेट्स अज्यूम देयर टू थम्स, दे आर फाइटिंग, दे आर फाइटिंग, दे आर फाइटिंग, है तो आपके दोनों के, आपके ही थम्स है दोनों। ऐसा तो नहीं है कि इनका है कि मेरा तो हम compete करें, नो, दे बोथ ऑफ योर थम्स। लेट्स अज्यूम एक थंब फाइट कर रहे हैं और my right hand, my right thumb wins. I won and I lost because both are part of me. Both voices are part of you. आप इनमें से किसी को भी जिताओ, आपने ही जीतना है, और किसी को भी हरवाओ, आपने ही हारना है। What if we integrate both of the voices, turn it into one, and ये सिर्फ तब आती है जब आपको emotional clarity हो। When we talk about we are having two voices, we are overthinking, maybe we are having the battle of two thumbs जो हमारे ही हैं, because we lack emotional clarity. Again, कपड़ा लेंगे और स्लेट को साफ करेंगे, सब करेंगे, स्लेट को साफ करो, आज क्लियर कर दो अपने माइंड को। क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, ये क्या है, ये क्या नहीं है। जस्ट
Take a decision with your gut. And that is why we say we need 21 days to reform a habit, but we need 30 days to gain emotional maturity. And we need to work every day. It's not about just weekends. It's been long years, whether you're 20, 25, 30, 35, 40. It's been too long to live a life जहाँ पे आपको emotional maturity नहीं है, जब आप दूसरों की external stimulus से परेशान हो जाते हो, and you sit back, you cry, and you think nobody understands me. I have been at your place. And trust me, when I talk about emotions, they're the most beautiful part of our life that are to be lived. I think कुछ time पहले यही मुझे बता रहे थे, emotions are so beautiful, but we end up, what was the exact quote? We end up expressing our emotions or using our emotions in the wrong way all our life. And we end up putting ourselves in situations जहाँ हमारे emotions waste हो जाते हैं. So you all are wasting your emotions. You have been wasting your emotions for so many years. Now is the time to stop it. Break the cycle of wasting emotions. Give yourself 30 days. And if you say, I am busy, just be easy on yourself. और ये जो अश्मीत जी का एग्जांपल था कि जो डिबेट होती है माइंड में कि इफ दिस इज फॉर और अगेंस्ट, तो एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मैंने 2 दिन पहले पढ़ा था कि लाइफ को एज अ पजल देखो. जब हम पजल को स्टार्ट करते हैं तो जितने भी ब्लॉक्स होते हैं पजल्स के, वो हम फिट करके देखते हैं फिट्स फिटिंग इन द प्लेस और नॉट. सो वो हमारे डिसीजंस होते हैं कि हम देखते हैं कि ये हमारा डिसीजन या तो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा. ये हम सोचते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता. एवरी डिसीजन इन योर लाइफ इज राइट फॉर योर सेल्फ. क्योंकि एट द एंड अगर एक पजल पूरी सॉल्व होती है तो जितने भी हमारे जो ट्राइज होते हैं या डूज एंड डोंट्स होते हैं, वो हम करके ही पता लगते हैं. सो डिसीजंस आर ऑलवेज राइट फॉर योर सेल्फ, बट उसको आपको जानना पड़ता है कि अगर आपने एक डिसीजन ले भी लिया तो उसको फिर अच्छी उसमें यू हैव टू लाइक इनकलकेट द थिंग्स. अगर एक पजल आपकी एंड में अगर एक पूरी पिक्चर बन रही है तो उसके पीछे आपने कितने सारे राइट्स एंड रॉन्ग्स करे होंगे, बट एट द एंड इट्स वन इमेज. तो एंड पे आके इट्स ऑलवेज अबाउट द फुल सीनरी और द फुल थिंग. जितने मर्जी आपने सही डिसीजन लिए हो या राइट डिसीजन लिए हो, एंड में आके इज एवरीथिंग गुड. सो अगर आपको पता ही है कि एंड में आके सब कुछ गुड है, तो फिर अभी आप राइट और रॉन्ग में करने में ज्यादा टाइम मतलब टाइम और इमोशन इतने वेस्ट करने की कैपेबिलिटीज होनी भी नहीं चाहिए, एंड वो होना भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में. So give yourself these 30 days and don't just stop wasting your emotions, because we are there to handhold you for 30 days. We are here to implement things. मार्केट में वी हैव एम्पल ऑफ इमोशनल मास्टरी कोर्सेज. हमने बहुत रिसर्च करी, बिकॉज हम जब खुद सिखाने वाले थे हमें लगा कि हमें पहले खुद इतना सीखना चाहिए कि अगर कोई हम पे क्वेश्चन आए ना, हमें उसके आंसर आता हो. We did a lot of courses, but one thing which we saw in the market, which was not there, was they never handholded us. They just gave us the courses, they gave us the material, and we thought we could get all of these things on YouTube, Google Chrome, GPT. Our favorite best friend GPT पे हमें सब मिल जाएगा, हमारा साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर सब बन जाएगा. पर जीपीटी में हमें इम्प्लीमेंट करना नहीं सिखा पाएगा. वो हर दिन हमें रिमाइंडर नहीं देगा, अब आपको इतने बजे उठना है, आपको ये हैबिट इंकलकेट करनी है. You'll not get beautiful good morning messages that you have to do this. You'll not, अब जैसे we were having an example that victimization होता है because वो love की need fulfill नहीं होती है. Imagine you're getting those beautiful sweet messages every day for 30 days even. Don't you think your need of love will also get fulfilled in that? You don't need love from specific people. Do you know that? You just need love. That's it. If you're feeling you need love from specific people, that's obsession or attachment. There's just the need of love. Let's understand this concept of EFT, which is emotional freedom technique. What is this emotional freedom technique? It is known as emotional tapping. Do you know all our emotions are actually in our body? When you feel emotions in our mind. That is not true. You feel emotions in your entire body. And there are certain points where we feel it and jahan se hum release kar sakte hain. So this is all the content and the theory which you can read by, but let's do it in the practical way. What we have to say is, okay, let's understand the science behind it first. कि EFT क्या होता है? Exactly. Somebody wrote in the chat box that there is a hormone known as cortisol, जो कि हमारा stress hormone होता है, जो कि stress से related होता है. And if you want to relax ourselves, if you want to have that safety, we have to manage our hormones. NLP says that each of your thought actually is
excretes one hormone. We have an hypothalamus gland in our mind जो हमारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं. अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है. अगर कोई हमें इग्नोर कर रहा है तो इग्नोरेंस हार्मोन रिलीज होता है. सो अभी हम यहाँ पे हार्मोन्स के नेम लर्न करने नहीं बैठे हैं. So I'm not telling you the name of the hormones right now. We are not here doing learning sciences and giving a paper. तो जो स्ट्रेस हार्मोन है वो आपको परेशान कर रहा है, जो इग्नोरेंस हार्मोन है वो आपको परेशान कर रहा है. नॉट योर थॉट्स, नॉट योर थिंकिंग. थिंकिंग से हॉर्मोन्स आपके ग्लैंड से एक्सक्रीट करते हैं और वो हॉर्मोन्स आपके 86 बिलियन सेल्स ऑफ योर बॉडी में जाते हैं. Each cell pains because of that ignorance, and that is why you feel so much pain in your body. कभी आप देखना कोई पर्सन आपको इग्नोर करेगा ना बहुत टाइम तक, तो आपकी बॉडी तक पेन होने लग जाएगी. आपके माइंड बॉडी इट विल बी लाइक जस्ट यू आर डन विद ऑल ऑफ दोस थिंग्स. वो कैसे होता है? पेन तो सिर्फ माइंड में होना चाहिए. एंड दैट इज हाउ हेल्थ डिसीजेस हैपन. सो व्हेन यू somebody says me I have an autoimmune disease, I ask the history कि ऐसा क्या हुआ पास्ट में. The person says, I was being ignored, I was being rejected, I was not being seen, I was not happens this. And when the person asks me कि इन emotions को feel करने से मेरा disease कैसे बन सकता है, because it is all in our mind. Because hormones जब release हुए वो हमारी 86 billion cells of our body के अंदर गए. उस हर सेल ने क्राई किया, पेन फील किया. एंड उसकी वजह से लेट्स अज्यूम आपकी लंग्स थोड़ी वीक है या आपकी लिवर थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा, एंड आपको हर दिन एक पर्सन इग्नोर कर रहा है फॉर 6 months स्ट्रेट. 30 days into 6, 180 days into 24 hours आपके उस लिवर ऑर्गन ने फील किया इग्नोर्ड होना, एंड द लिवर कोलैप्स्ड. एंड फिर हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा प्लीज गिव मी मेडिसिन, और डॉक्टर ने वो मेडिसिन दे भी दी, ये सोचे कि आपका लिवर खराब है. बट द डॉक्टर नेवर न्यू दैट आपके इमोशनल कंट्रोल नहीं था. You felt so bad that the cells of your liver collapsed. That does not mean कि अगर कोई पर्सन बहुत थिंक कर रहा है तो उसको कोई डिसीज होगा ही होगा. कुछ पर्सन को 10 years में दिखता है, कुछ पर्सन को 20 years में दिखता है, कुछ पर्सन को 2 साल में दिख जाता है, कुछ पर्सन को 5 साल में दिख जाता है. But every emotion you are feeling today will have an effect on your body and on your cells. You can see the cell diagram. That is why emotional safety is very important. That is why I say don't be in toxic relationships just because you are attached, because maybe आपको अभी उसका effect नहीं पता चल रहा, but after some years when your body will start collapsing you will see that effect. So don't pain those 86 billion cells. You're not here sitting here just to listen to us, just to have no battles between your heart and mind. You're sitting here for your 86 billion cells existing in your body. कभी ऐसा होता है कि हम बहुत खुश होते हैं. I'll give you an example, I'll give you a proof. I always say मेरी बात इतनी आसानी से मत मानो, I'll give you a proof. कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, कुछ आपकी विक्ट्री होती है या आप किसी पर्सन के साथ होते हो कि आप बहुत खुश होते हो, तो अगर आपको कोई बॉडी में पेन हो भी रही होती है ना, आपको उस टाइम के लिए फील ही नहीं होती है. कभी आप इसके पीछे साइंस पढ़ी, ऐसा क्यों होता है? आपको पेट दर्द हो भी रहा होगा ना, बट अगर कुछ बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट होगा आपकी लाइफ में तो पेट दर्द होना बंद हो जाएगा. लेट्स अज्यूम आप मैरिज में गए किसी की, आपको बहुत अच्छा लगता है किसी की मैरिजेस अटेंड करना. लेट्स अज्यूम एग्जांपल, आपका स्टमक बहुत एक हो रहा था, आपने सोचा मैं कुछ नहीं खाऊंगी वहां जाके बिकॉज माय स्टमक इज एक. एंड यू आप वहां पहुंचे और आप, जी ऐसा होता है सी, और वहां पे आपका पेट दर्द खत्म हो गया एकदम से, आपको खुद नहीं पता कैसे खत्म हुआ बट हो गया. फिर जैसे आप घर में वापस घुसे आपका पेट दर्द फिर होना शुरू हो गया. उसके पीछे कभी साइंस सुनी है क्या, क्यों होता है ऐसा? ऐसा पॉसिबल है? मतलब स्टमक क्या हो गया, सुन हो गया उस 2 घंटे के लिए? नहीं, वो पेन एग्जिस्ट करती थी, बट बिकॉज आप हैप्पी थे, आपका डोपामीन रिलीज हो रहा था, आपने वो पेन को फील करना बंद कर दिया. एंड इमोशनल मास्टरी में हम दो चीजें सिखाते हैं. फर्स्ट हम पहले सिखाते हैं उस पेन को फील करना बंद करना, एंड सेकेंड हम सिखाते हैं उस पेन का जो ट्रिगर या रूट कॉज है उसको खत्म करना. लेट्स अज्यूम यू हैव अ डिसीज, एनी डिसीज एग्जिस्टिंग, हम उस डिसीज को 2 दिन में खत्म नहीं कर सकते, पर हम उस 2 दिन में आपको उस पेन को फील करना बंद करवा सकते हैं. एंड ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स, मे बी 3 months और 4 months, हम उस डिसीज को भी खत्म कर सकते हैं. बिकॉज अगर कोई चीज यहां से बॉर्न हुई है तो वो यहां से खत्म हो सकती है. If you want to search for it, go onto the Google, see what can NLP do. Can NLP benefit
In autoimmune disease होता है जो हमारी body खुद produce करती है diseases. It can also cure that. It can even cure cancer because it all starts from our brain. It all starts from our thinking. It all starts from our overthinking. So don't think if I'm overthinking today, it is okay. It is not okay. And what we say in every class about okay and not okay. It's okay to not know that you are facing this. But once you know, today all the 11 people, 10 people, all the people know that you have these trigger points, you have these problems in your life. Now it's not okay to not work upon it. And if you're still not working upon it, then you are at fault. Till now, you were not at fault. But now, from this day, from this point of view, it is your duty to do that. So before we start with the EFT and we end the class, we want, if you have any doubts or questions, you can ask us related to today's class, and then we'll do one EFT exercise and we'll end up the session. Any doubts till now? No doubts? That's amazing. All right. So what we have to say is, even though I feel angry, sad, or frustrated, I deeply and completely accept myself. So if you feel ignored, you will say, I feel ignored. If you feel angry, you will say, I feel angry. If you feel sad, you will say, I feel sad. So whatever emotion you have, if you feel judged, even though I feel judged, I deeply and completely accept myself. All right. What will you speak? Have you written it on the paper? Even though I feel irritated, judged, frustrated, angry, sad, I deeply and completely accept myself. Please write it down. Let's understand what are the points. The first point is thumb ki sideline, the sideline of the thumb. Can you show me on the cameras? Can we have the cameras on? We have to do the cameras on right now. Otherwise, aap galat karoge. The sideline of the thumb. The next is the sideline of the fingers. These all are your emotional points. These all are your emotional points. And then, do you feel headache? Do you feel headache? Anybody who feels headache a lot in the day? फिर हम कहते हैं इसकी वजह से सिर दर्द हुआ. फिर हम उस पर्सन का नाम ही सिर दर्द रख देते हैं. ओ सिर दर्द चल के आ रहा है रूम में. So it's not सिर दर्द. It's just okay. It's just emotions here. So this is the tapping. Then sometimes we feel हमारे eyebrows बहुत भारी हो रहे हैं. बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे. Feel होता है. Next point comes in here. Then all the people who wants to learn communication but are too lethargic to learn communication by being in the class. The next point is here, above the lips. Then the next point is here, on the chin. Then we have here, our collarbones. All right, let's do it. So what we'll speak, you need to pin me so that you know you're doing it right, okay? The first we'll say, you'll speak yours. Even though I feel angry, sad, frustrated, judged, or ignored, I deeply and completely accept myself. You need to also speak out loud. Don't unmute, but speak out loud. Man mein nahi bolna. The next is, even though I feel angry, sad, frustrated, judged, or ignored, I still accept myself. Even though, the next finger, even though I feel angry, stressed, ignored, judged, I still completely, deeply, and completely accept myself. Even though I feel angry, sad, frustrated, or ignored, I deeply and completely accept myself. Even though I feel angry, sad, frustrated, I deeply and completely accept myself. Even though I feel angry, sad, frustrated, or judged, I deeply and completely accept myself. Even though I feel ignored, judged, angry, sad, I deeply and completely accept myself. Even though I feel angry, sad, frustrated, I deeply and completely accept myself. Even though I feel angry, sad, frustrated, judged, I deeply and completely accept myself. Now you know what you're wanting to say out of all these. We don't have to speak all the emotions in one go. It was just a trial. Now pick up your emotions which you feel often and say. Let's do it once again, the very last time. Pick up your emotions, what you face a lot. Even though, let's start. Even though I feel
your emotion, whatever emotion you want. I deeply and completely accept myself. Even though I face this in my life, say what you face, I still deeply and completely accept myself. Even though people ignore me, people ignore my texts, people ignore me in real life, I still deeply and completely accept myself. The next finger, even though I get judged when I want to communicate to people, I still deeply and completely accept myself. Even though I have self doubts in my heart, even though people tell me I can't do this thing, I still deeply and completely accept myself. Even though people do not understand me in my life, even though I am not loved and given so much attention which I deserve, so much love which I deserve in my life, I still deeply and completely accept myself. Even though my family members, friends do not give me that much attention or love or care which I need and require to sustain, I deeply and completely accept myself. Even though I feel left out, even though I am being judged, even though I feel nobody loves me, I still deeply and completely accept myself. Even though I have self doubts on myself, even though I feel sometimes that I may not be able to do all of these things, I still deeply and completely accept myself. Even though I go with what people say in my life and I'm not able to take the right decisions, even though I have battles in my mind, debates and rebuttals going, I still deeply and completely accept myself. Then we'll pay gratitude to the universe for helping us through all the situations. We'll pay gratitude to all the magic which happened in our life till now. And we will say out 5 things we are grateful for. It can be your family members, your friends. Maybe you are able to attend this class and you're grateful for this. It can be as simple as that. Even though any of the person in your life whom you can reside in emotionally, you can be grateful for that. Your parents, your friends, any person, anything. So write down in your mind the first grateful point. What are you grateful for? Say, I am grateful for this magic in my life. And the magic is the second point. I have been blessed with so many good things in my life, though I forget these things when I am in pain, but I still am grateful. I am grateful for, let's jump on to the third point. I sometimes get lost in my problems and challenges, but I can never forget what God has gifted me. Thank you, God, for all the gifts, but my most precious one has been dash. Fill in the dash. The next one. Thank you so much, God. I pay gratitude to all of the things you have blessed me with. And these are the few things I'm extra grateful for. And say out 2 more things. Then rub your hands and put it on your eyes and slowly open your eyes.